Currently, what we are seeing because of the very high or bad AQI is basically the acute effects. Viral infection जो है मानसून मंथ्स में और सर्दियों में स्पाइक करते हैं और इस दफा क्योंकि मानसून थोड़ा लंबा रहा तो वायरल इन्फेक्शन की हमने ज्यादा देखी. Pollution and what kind of patients you are seeing these days? So health hazards related to air pollution could be acute effect and the chronic effect. Currently, what we are seeing because of the very high or bad AQI is basically the acute effects, and they can be because of people who have underlying heart or lung disease or who are older of older age group or younger children. In them, we are seeing more of chest discomfort, breathing difficulty, cough. Many patients are feeling chest tightness in the night, and this worsening of the underlying condition. If a person has asthma, COPD, his wheezing or his breathlessness is increasing, they're not able to breathe. Patients with heart disease, their breathlessness again is increasing, heart failure is becoming more. And because of this, there is increasing emergency visits, doctor visits. A study we had done many years ago, which was done at AIIMS, showed that when air quality becomes very bad, in the next 4 to 6 days, there is an increase in emergency visits by people with respiratory problems, both children and adults. So the acute problem that we're going to see is because of this. The other thing is that even healthy people who don't have underlying disease are also experiencing stuffiness of the nose, pain in the throat, chest tightness and coughing because of the high effects of air pollution, because this pollutant is when it goes into the lung, it causes airways to become inflamed and narrowed and leads to breathing difficulty. Some people complain of wheezing, and these are people who have never had any chest problems or who have come from outside to Delhi for work and have now started having problems. So this time the permission was given for the green crackers also. So do you think this is also the reason of worsening of the air? So I think for the last few years one has been very strict about allowing crackers because of the fact that they also add on to air pollution. There are multiple factors which come into play. One is weather related and the other is the emission related. So if you look at emissions, then crackers are a factor which is emission related, and with the large number of crackers being burned because there was permission given, and then obviously we know that if permission is given then it doesn't become green or non-green, all types of crackers are used, and there was no control as far as that was concerned. And also the weather was such that there was less wind and all the pollutants stayed at ground level, and that was also worsened the quality of air. What are the preventive measures as of now? We can see the quality of air is still poor and very poor. So I would say the first thing is people who have respiratory problem, who have heart problems, the elderly and children should monitor the AQI, see what the AQI is in their area, and avoid going out early in the morning and late in the evening, because when the weather is cold, because of the cold temperature, air quality, poor air or pollutants tend to stay more at ground level. So once the sun is out, then only go out if you have to go out. If you're going out, you should wear a mask. N95 masks are useful, but some people find it difficult to wear them. But if you can wear them, then go out. When you go out, please wear a mask. Keep yourself well hydrated. Take good amount of fresh fruits, green leafy vegetables. Avoid exercising early in the morning and late in the evening. And if you have any breathing difficulty, chest congestion, your underlying condition is getting worse, you must consult your doctor so that you can start treatment early rather than having any severe problem and having to come to hospital. And so for children? For children also, it becomes even more challenging because children tend to play a lot outside, and when they play they breathe more rapidly, so they inhale more pollutants because their respiratory rate is higher. It's also difficult for children to wear masks. They don't find it that comfortable. So I would say the same thing, that if children are going out to play, they should go out either in the afternoon or avoid going out early in the morning and late in the evening, and to do indoor activities if possible. सर, हर साल की तरह इस बार भी जो है एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है. वजह ये भी हो सकती है कि इस बार क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स का भी इस्तेमाल हुआ और साथ में स्ट्रबल बर्निंग, कई सारे कारण हैं, साथ में मौसम भी. ऐसे में किस तरह के पेशेंट्स आपको देखने पड़ रहे हैं? क्या कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स हैं जिनको जो आईसीयू में एडमिट हैं? आखिरकार इन सब से कैसे बचा भी जा सकता है? आप
तो अगर हम देखें तो जब भी एयर क्वालिटी खराब होती है तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ रहती है या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके जो एक्यूट इफेक्ट्स होता है इस हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स का, वो देखा जाता है। और इससे उनको सांस की तकलीफ होने लगती है, चेस्ट में टाइटनेस होने लगती है, खांसी होने लगती है, कभी कभी गले में खराश होती है, और इसके कारण कई लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ता है। इमरजेंसी विजिट्स जो हैं, जब एयर क्वालिटी खराब होती है उसके अगले फॉलोइंग 4 से 6 दिन में बढ़ जाती है, तो इंक्रीज इमरजेंसी विजिट्स, ओपीडी में पेशेंट्स जो हैं जिनको सांस की तकलीफ बढ़ गई है उनका आना बढ़ जाता है, इनहेलर्स की या नेबुलाइजर्स की जरूरत भी बढ़ जाती है। और ये ओल्डर एज ग्रुप में भी देखा जाता है, बच्चों में भी देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों को कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी हैं, क्योंकि वो अगर बाहर इस फैक्ट्री से पुअर क्वालिटी एयर में सांस ले रहे हैं तो उनको भी चेस्ट की टाइटनेस और खांसी शुरू हो जाती है, और ये खांसी कई दिन रहती है, और इसके कारण भी उनको काफी तकलीफ रहती है। सर, आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए एक तो यही है कि हम जितना एक्सपोजर अवॉइड कर सकें वो करने की जरूरत है। तो AQI को हम मॉनिटर करें। अगर AQI पुअर, वेरी पुअर रेंज में है तो बाहर ना जाएं, और स्पेशली सुबह और शाम को, क्योंकि जब ठंडा मौसम होता है तो ठंड के कारण जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जमीन पे ज्यादा रहते हैं, तो बाहर जाना है तो जब धूप निकल जाए, जब गर्मी हो जिससे पोल्यूटेंट्स ऊपर उठ जाए, तभी जाना चाहिए। और अगर बाहर जाना जरूरी है तो मास्क लगाएं, N95 मास्क अगर लगा सकते हैं तो बेहतर है। एक्सरसाइज ना करें सुबह और शाम को। अगर आपने जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो दिन में करें, दोपहर को जब धूप निकल जाए और AQI थोड़ा सा बेटर हो। और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, फ्रेश फ्रूट्स की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। और जिन लोगों को सांस की तकलीफ रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो अपना ज्यादा ध्यान रखें। अगर उन तकलीफ बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और अपनी दवाइयां हैं, हो सकता है कि उनको बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। सर, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, साथ में अपनी और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर प्ले ग्राउंड्स में जाते हैं? बच्चों को कल चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चे जो है मास्क वगैरह नहीं लगाते, वो भागते हैं तो वो सांस ज्यादा तेजी से लेते हैं, और इसलिए वो उनके लंग्स में पोल्यूटेंट्स और जाते हैं। बेस्ट यही रहता है कि वो अगर एयर क्वालिटी खराब हो तो वो अंदर ही खेलें, बाहर ना जाएं। और अगर बाहर जाना ही है तो जब धूप निकल जाए, AQI बेटर हो, तभी जाएं। अगर जिन बच्चों को सांस की तकलीफ है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर जरूरत हो तो उनको अपनी दवाई बढ़ा लेनी चाहिए। सर, जैसे कि इस बार इन्फ्लुएंजा के केसेस भी हुए थे, तो OPD में ऐसा देखा गया कि इस बार जो है पेशेंट ज्यादा आए हैं इस दौरान। तो इन्फ्लुएंजा के इस दफा केसेस ज्यादा आए हैं, फ्लू के, और ये कुछ हद तक मौसम के कारण भी है, क्योंकि जो पुराना डेटा है वो ये कहता है कि जब भी मानसून ज्यादा होती हैं तो फ्लू वायरस जो है वो ज्यादा हवा में रहता है, वो ज्यादा फैलता है। तो इट्स लाइकली, क्योंकि इस दफा बरसात ज्यादा रही, काफी टाइम के लिए रही, तो वन ऑफ द फैक्टर्स जो हम कहते हैं ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेदर फ्लू ज्यादा रहा। इस दफा काफी पेशेंट्स रहे जिनको इन्फ्लुएंजा रहा, कईयों को काफी सीवियर इन्फेक्शन हुआ, ICU में भी एडमिशन की जरूरत पड़ी। तो वायरल इन्फेक्शन जो है मानसून मंथ्स में और सर्दियों में स्पाइक करते हैं, और इस दफा क्योंकि मानसून थोड़ा लंबा रहा तो वायरल इन्फेक्शन भी हमने ज्यादा देखे हैं।